This is a problem taken from trigonometry ratio and identities. It is said that if sine alpha plus sine beta plus sine gamma is 0, cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0. So you have to find out the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. And then we have to find out the value of sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma. Now the moment we get the value of the first one, finding out the second is not a problem. So I will suggest all of you to pause the video right here and give a try to this sum. If you cannot solve or if you face any problem during solving, please come to the video and see the solution. So ये sum कैसे करें? Sin alpha plus sin beta plus sin gamma is 0. So let us start with this. We can write sin alpha plus sin beta is minus sin gamma, and cos alpha plus cos beta is minus cos gamma. Okay? So now, if we square and add the corresponding sides, we are going to have plus cos alpha plus cos beta whole square is sin square gamma plus cos square gamma. Okay? So if we open this bracket, we are going to have sin square alpha plus sin square beta plus 2 sin alpha sin beta from the first bracket, and from the second bracket we are going to have cos square alpha plus cos square beta plus 2 cos alpha cos beta is basically 1. Now we are having this sin square alpha plus cos square alpha can be written as 1. Sin square beta plus cos square beta can be written as 1. And if I take 2 common, so we are having cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, which gives us cos alpha minus beta, which is equals to 1. So from here we can write cos of alpha minus beta is basically minus half, right? So we got cos of alpha minus beta is minus half. In the similar way, we have taken sin alpha plus sin beta equals to minus sin gamma in this equation. And in this equation, we have taken cos alpha plus cos beta equals to minus cos gamma. Now, if you keep sin alpha and sin gamma in the left hand side, and if we take sin beta in the other side, then we are going to get the same thing here. Cos alpha minus gamma, which is again minus half, and cos beta minus gamma, which is also equals to minus half. In the similar way, I have taken sin alpha plus sin beta equals to minus sin gamma. If you take sin alpha plus sin gamma equals to minus of sin beta, in that case, you are going to have the value of cos alpha minus gamma is equals to minus half. In the similar way, we will get cos beta minus gamma is also equals to minus half. Okay. What else? What else we can do? Let me do one thing. Let me square both sides of this equation number 1 and equation number 2, and let us subtract 1 from 2. That is cos alpha plus cos beta whole square minus sin alpha plus sin beta whole square. So we are getting in this case cos square gamma minus sin square gamma. Now if I open the brackets, we are going to have cos square alpha, cos square beta plus 2 cos
alpha cos beta minus sine square alpha minus sine square beta minus 2 sine alpha sine beta, and in the right hand side we are going to have cos 2 gamma. Okay, in the left hand side बच्चों देखो यहाँ पर cos square alpha minus sine square alpha है, right? Cos square alpha minus sine square alpha can be written as cos 2 alpha. Cos square beta minus sine square beta है, इसको लिख सकते हो cos 2 beta, and from this 2 if I take 2 common, so we are going to have cos alpha cos beta minus sine alpha sine beta, which will give us cos alpha plus beta, which is your cos 2 gamma. Now if I apply cos c plus cos d for this one, we are going to have 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, equals to cos 2 gamma. We have cos of alpha minus beta is minus half. So we are getting minus cos alpha plus beta plus 2 cos alpha plus beta is cos 2 gamma. So from here we are getting what? We are getting cos alpha plus beta is cos 2 gamma. Is it clear? Now in the similar way, from 1 and 2, if we keep the other angles in the right hand side, simply by making a permutation combination for these angles, and if we keep 2 other angles in the left hand side and the other angle in the right hand side, we are going to have cos beta plus gamma is cos 2 alpha and cos gamma plus alpha is cos 2 beta. So these are the very important relation that we got. Okay? अभी देखो मुझे निकालना है एक्चुअली क्या? मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. सो इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं. मेरे पास दिया हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0. सो इसको स्क्वायर करो और माइनस करो sin alpha plus sin beta plus sin gamma whole square. So this will give us 0 because cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma is 0. So दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा. Now if I open the brackets, this is actually a plus b plus c whole square. So a plus b plus c का whole square का जो फॉर्मूला है a square plus b square plus c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बेसिक फॉर्मूला है. तो यहां से मुझे a स्क्वायर आएगा क्या? cos स्क्वायर अल्फा. यहां से a स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा. सो उसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा. सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स यहां से आएगा cos अल्फा cos बीटा और यहां से आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. सो दैट विल गिव अस cos अल्फा प्लस बीटा. सिमिलरली cos बीटा प्लस गामा प्लस 2 cos गामा प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 0. अभी बच्चों cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो मेरा cos 2 अल्फा है.
cos 2 beta, cos 2 gamma, plus 2 times cos alpha plus beta, cos beta plus gamma, cos gamma plus alpha. This is equals to 0. अभी हम लोगों को क्या मिला? cos alpha plus beta is cos 2 gamma, cos beta plus gamma is cos 2 alpha, and cos gamma plus alpha is cos 2 beta. So we can write this thing as ये जैसा है वैसा है, और इसके लिए लिखेंगे हम लोग which is equals to 0. मतलब क्या आ रहा है? 3 times which is equals to 0. So from here we can write cos 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 बीटा को हम लोग लिख सकते हैं एंड cos 2 गामा को हम लोग लिख सकते हैं, राइट? मतलब क्या आया मेरा? 2 times cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 3. So that implies cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. This gives us how much? 3 by 2. Is it clear? मतलब मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसका वैल्यू मुझे मिल गया cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. इसका वैल्यू कितना आया? 3/2. अभी यहां से मुझे निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा. दिस इज इक्वल्स टू 3/2. इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. This is coming like 3 minus 3/2. That is 6 minus 3/2. So that gives us 3/2. इसका मतलब क्या हुआ? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका भी वैल्यू आ रहा है 3/2. And that's your answer. Okay? Is it clear to all? Okay.